I would like to warmly welcome Worthy Vice Chancellor for giving us honor to be here with us this very important event. I also welcome the keynote speaker, Dr. Sanana Balsa, and respected all the professors, directors, chairpersons. Pakistan Study Center is established under the Act of Parliament. It's leading research-intensive institution of higher education in Pakistan. We teach and research across a wide range of subjects in the field of Pakistan studies. The center is committed to maintain high standards in teaching, research, and learning experience, employability, and institutional linkages with the public sector organizations. This seminar is being organized by Pakistan Center UNICEF Sindh to increase our understanding of global challenges of the cybercrime. As we know that the new digital technology is portrayed a great trump in the field of knowledge, information, communication, and intelligence. Nevertheless, it is also blamed for the creating undesirable consequences, including digital addiction, artificial behavior, and cybercrime. Cybercrime is borderless in the sense that cyber criminals, they operate from any part of the world, and they employ the sophisticated techniques. This makes it more complex, and we cannot deal with this issue through the traditional way, but we have to ensure that we are using the non-traditional ways to deal with this huge crime. And cybercrime also cause huge economic losses, and some nation states also engage the cyber criminals, cyber warfare, as part of their political agendas and political strategies. These state-sponsored cyber operations pose a significant threat to global peace and security. The effectiveness of law enforcement agencies, improved cyber security apparatus, awareness, education, legal frameworks are essential components of the comprehensive strategy to combat cybercrime. We have one very learned speaker to offer insights on how we can tackle cybercrime. I will now be handing over the floor. Particularly on a very serious subject of this cybercrime in a global context, but specifically I will focus upon the Pakistani perspective, because we are living in Pakistan, in a society where we are performing our own activities. This is important subject because this is now a buzzword. So basically everything has been transferred to the cyberspace, ranging from academia to the business and from governance to the banking sector. Approximately everything has been transferred to cyberspace. Particularly in era of this pandemic, corona pandemic, almost everything has gone to the cyberspace. This was the only pandemic where the human activity was not stopped. Even it was not contained to the larger extent that it may hamper the human activity. So this was one of the positives of this cyberspace. But because this cyberspace has been created by human being, it was discovered by human being, there are so many positives. It has brought a revolution in the in this world.
I probably think that this was the second revolution after the Industrial Revolution. After Industrial Revolution, there were so many power centers were shifted from agrarian societies to the industrial societies. Some societies has become more powerful, and some countries or societies has become less powerful. You have seen the example of Japan, USA, European countries. They assume the power, defeating the Turkish Empire, defeating this Roman Empire, and even the Persian Empire. Meaning by this Industrial Revolution shifted the power centers. This Internet revolution, probably when you think of future times, it will also change the dynamics of the world power. And those people who are investing in this Internet or information technology will reign supreme in this world, in the coming words. Therefore, this is very, very important, because those people who has excelled in Internet or information technology will reign supreme in this world in future. But because it is regulated by the human being, the human behavior is to be regulated in cyberspace also, as we have done in the material world. Only in China, 1.05 billions are using the Internet. And this Internet is primarily used by the younger generation. Meaning thereby that if anything is used by the younger generation, it's a future of any society. When coming to Pakistan, 111 million people are using Internet, and even 188 million people have a SIMs in a mobile telephones. These figures shows that majority of the people are using the Internet. It amounts approximately 45% of the entire population in the world. It is using the Internet, and that too by younger generation, that too by the educated class. These indicators show that the world belongs to the Internet. But if it is to be handled by the human being, it is to be regulated. In Pakistan, 3 laws were passed by state of Pakistan which regulate the Internet. Number one was this Electronics Transaction Ordinance 2002, where these credit cards and debit cards were regulated. We cannot abridge the rights of a human being in the cyberspace. I am giving you an example of particular 2-3 examples, because there are so many competing rights. Right of privacy. Right of privacy cannot be abridged, cannot be violated at any cost. My privacy is my right. Your privacy is your right. It cannot abridged, it cannot interrupted. One thing which is very debatable in this society, in an entire world, that is right of freedom of speech. These are the competing rights. What is the right of freedom of speech and what is the right of privacy? What is the right of freedom of speech and what is a hate speech? Particularly hate speech and the right of freedom. These are 2 competing rights. Particularly जो हमें टेक अवे है वो यही है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसकी डिग्निटी का ख्याल ज़रूर करना है। ये फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हुकूक है। जो भी बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखते इंटरनेट पर, पर्टिकुलरली प्राइवेसी का, ये जितनी भी आप लोग देख रहे होते हैं इनक्रिप्टेड होती है, फायर वॉल्स होती हैं, सिर्फ इसीलिए होती हैं कि प्राइवेसी मेंटेन की जा सके।
अगर इसको कोई हैकिंग करके, इसको कोई ब्रिज करके सीक्रेसी, कोई प्राइवेसी आउट करता है, इट्स अ सीरियस क्राइम। नंबर 2, डिग्निटी ऑफ पर्सन, किसी भी इंसानियत की तजलील करना साइबर स्पेस पर बैन है, इट्स अ क्राइम, उसकी सज़ा मुकर्रर है। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात है, आज़ादी की, हर बंदे को आज़ादी है बात करे, और दिस इज़ अ ग्रेटर स्पेस। हर बंदा, आप देख रहे होंगे कि बड़ी आज़ादी के साथ बातचीत होती है, बट इट मे बी मॉरली कंट्रोल्ड या मॉरली रेगुलेटेड तो ज़्यादा अच्छा होता है। जहाँ तक मेरा राइट होता है तो दूसरे का राइट शुरू हो जाता है। बट इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या किसी और जगह पे, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे होंगे कि क्रिटिसिज्म बहुत कुछ होता है, बहुत। तो समटाइम्स इट इज़ जस्टिफाइड, समटाइम इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। देयरफॉर अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो ये जो मैंने क्राइम फिगर आप लोगों को बताई, वो सारी तकरीबन FIA में रिपोर्ट होती हैं। अभी जो नई एजेंसी बनी है उसमें ये रिपोर्ट होंगी। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पब्लिक को कोई कदन लगाई जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे या फ्रीडम ऑफ डिसेंट पे, बट इट शुड बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ एक रीजनेबल डोमेन में। डॉक्टर सनाला अब्बासी जी इंटेलिजेंस ॾिसी जेके उन वक़्त जा सिलेक्शन बोर्ड या CSS जे इम्तिहान जा एक्सपर्ट्स आहिनि, उहे ॿुधाइनि था त इंटरव्यू दौरान इंटेलिजेंस जे बुनियाद ते त इंटेलिजेंट एतिरो आहे जंहिंजे बुनियाद ते हुनखे पुलिस ग्रुप एवार्ड थियो। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जेके अकेडमिक प्रोग्राम्स हलनि था, जेके साइबर क्राइम या इन फील्ड सां वास्तो रखनि था, त उन में स्टडी कराइण ऐं उन जा सोल्यूशन्स ॾियणु। उन में कंप्यूटर साइंस चओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चओ, सोशलॉजी चओ, क्रिमिनोलॉजी चओ, ऐं अॻिते हली करे इन खे वरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चओ, फोरेंसिक अकाउंटिंग चओ या फ्रॉड एग्ज़ामिनेशन चओ। इन्हनि जा प्रोफेसर्स असांजे साम्हूं डॉक्टर लक्ष्मण दास साईं, जेको तव्हांजे भरिसां वेठल आहे, ही इज़ डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। साईं जे फैकल्टीअ में जेका यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जी आहे, उन में MPhil ऐं PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थिए थी। ऐं रिसेंटली इन जा 2 जेके स्कॉलर्स आहिनि जिन PhD आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्लीट कई आहे। साॻी तरह सां हिन साल ही जेको 2024 साल हले पियो, ड्यूरिंग दिस पीरियड, माना हिन सेशन जे लाइ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में शुरू कयो वियो आहे, जंहिंमें ही जेके असांजा ॿार जेके वेठा आहिनि नौजवान, इन्हनि खे बि अॼुकल्ह जो दौर ऐं 20 साल में 40 साल दौर में वॾो फ़र्क़ु आहे। ख़ुदि बि जेको इंटरनेट जे थ्रू या मोबाइल जे थ्रू ॾिसनि था त कहिड़ी फील्ड फ्यूचर में काराइती हूंदी या कम जी हूंदी, जंहिंमें जॉब्स बि मिलंदा ऐं जंहिंजी ज़रूरत बि आहे। त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एतिरी त एनरोलमेंट एज़ पर मेरिट, टॉप मेरिट जेका प्रो आहे उन में आई, जो आख़िरकार यूनिवर्सिटी जे एकेडमिक काउंसिल ऐं जेके फोरम्स आहे उन्होंने इवनिंग प्रोग्राम जे लाइ रिकमेंड कयो। जॾहिं टेक्नोलॉजी तरक़ी कई ऐं टेक्नोलॉजिकल जेके इन्वेंशन्स थियूं, उन्हनि जे करे मामला तेज़ थिया ऐं सहूलियतूं वधियूं। त साॻी तरह सां उनखे काउंटर करण जे कारण उन में जेको क्राइम आहे या जेको चोर जीअं हूंदो आहे, उन बि पंहिंजा गस वरी चेंज कया। ऐं साॻी तरह सां
साइबर क्राइम में भी सागा टेक्नोलॉजी जा माहिर इन्वॉल्व आहिनि। ही जेके असांजा जेके आहिनि, पर जॾहिं को प्रॉब्लम थिए थो ऐं प्रॉब्लम नोटिस में ईंदो, जेके सोशोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट या लॉ जेके ॿिया जेके डिपार्टमेंट जीअं बैंकिंग आहे, उन्हनि खे जॾहिं को प्रॉब्लम रिपोर्ट थो थिए, उहो रिपोर्ट कम्युनिकेट कंदा जेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो, कंप्यूटर साइंस जो, IT जा जेके माहिर आहिनि, उनखे प्रॉब्लम सबमिट थो थिए। उन प्रॉब्लम जो इहे सोल्यूशन ॿुधाइनि था माहिर। उहे चवनि था 10 सालनि खां पोइ ही जेके स्मार्ट फ़ोन्स आहिनि ऑब्सोलीट थी वेंदियूं। हाँ जेकॾहिं 10 सालनि खां पोइ जंहिंजे हथ में 50,000, 10,000, 20,000, लख रुपए वारी मोबाइल या जेकॾहिं ऑब्सोलीट थी वई, त पोइ ॿी जेका टेक्नोलॉजी हूंदी उहा कहिड़ी हूंदी। ऐं जॾहिं मां पंहिंजो तव्हांखे मिसाल त मुंहिंजो मटीरियल्स रिसर्च नैनो पार्टिकल्स या नैनो लेवल ते जेका रिसर्च हुई PhD जी, उन वक़्त में हिकिड़ो प्रोजेक्ट मिलियो हो ऐं उन में इहो हो त फ्यूचर में प्लानिंग इहा आहे त कंप्यूटर्स विल बी वेयरेबल, कपिड़े वांगुरु जीअं पातल हूंदा ऐं जीअं रेप करे छॾियो त बराबरि जॾहिं वॾा कंप्यूटर हाणे ॾिसो नंढा थींदा 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 हाणे बराबरि रेप थी विया आहिनि। पर उन में इहो त उन्हनि हिकिड़ो ईअं चयो त कंसेप्ट वारे नमूने सां इहो कंसेप्ट हो। जेकर प्रॉब्लम्स आहिनि उहे अचनि था, उन्हनि खे एड्रेस थियनि, उन्हनि जो सोल्यूशन वञे, ऐं उन खां पोइ जेका नेशनल लेवल ते लेजिस्लेशन थिए थी त लॉ वारा उनखे लेजिस्लेट कनि। पर उन जेसिताईं टेक्नोलॉजीअ जा माहिरनि जी इन्वॉल्वमेंट न हूंदी त जेके बि ऑर्डिनेंस अचनि पिया, जेके सनाला साहब कोट कया, उन्हनि में अञा ताईं जेके खामियूं आहिनि। हाणे जेकर उनखे इम्प्लीमेंट कजे थो त प्रॉब्लम थो थिए। इन जे करे जॾहिं पाण जेका रिसर्च कयूं था त रिसर्च में जेको प्रॉब्लम अचे थो उन में रिसर्च में सोल्यूशन ही टेक्नोलॉजी जा माहिर ॾींदा। उनखे लीगलाइज या लेजिस्लेशन तरफ़ जॾहिं वठी वञिबो त उन में भली वकील जेके पंहिंजे कानून ठाहिण वारा ऐं कानून ठाहिण वारा जॾहिं हिकिड़ो ड्राफ्ट ठहे थो, उन खां पोइ ज़ाहिर त असेंबलीज़ में वेंदो ऐं गवर्नमेंट जेको प्रोसीजर आहे उन त उनखे पास कंदी। डॉक्टर सनाला अब्बासी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने टाइम निकाला कि अभी तक वो इन सर्विस है और सीनियर रैंक्ड पुलिस ऑफिसर इन द पाकिस्तान, उसमें जो 2-3 जो सीनियर मोस्ट हैं उसमें अब उसकी सीनियरिटी है, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस मकसद वो जो अप्रोच एकेडमिक है शुरू से रही। इस दौरान ये अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करते हैं और उसने PhD भी किया और अब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इसकी ये जुड़ा हुआ है और उनके साथ ये जो इंटरेक्शन पे अपना टाइम निकाल के वहाँ आता है। तो इस किस्म के सेमिनार्स या लेक्चर्स वो हम और भी बढ़ाएंगे। उसके लिए एक जो सारे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो तो अवेयर है, लेकिन उसकी अफादियत के बारे में थोड़ा सा बताओ जी। हमारे पास जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनी है, ये स्मार्ट क्लासरूम का अल्टरनेट है। अगर इस किस्म का, इस लेवल का वो आपको इस स्पीकर्स जो अप्रोच करते हैं या आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको अपनी डेस्टिनेशन या जो उसकी लोकेशन वहाँ से लाइव उस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आप उसका लेक्चर करा सकते हैं। इधर वो भले कराची बैठा हुआ हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ 80 से 100 स्टूडेंट्स उस हॉल में हम बिठा सकते हैं और उसमें हम लेक्चर करा सकते हैं।